Next topic we will take now. This is 6.8.1. Diameter and conjugate diameter. Diameter. So diameter is what? If you have, suppose parallel chords, several parallel chords. Suppose I am taking some conic. This is suppose your conic, and you have parallel chords like this. These are the parallel chords. ये जो chord है अंदर, this is parallel. So if you take a line, yeah, you can say the locus of the middle points of a system of parallel chords. Locus of the middle points, like this. So this, the locus will be a line, of course, and this will be crossing the middle point का मतलब तो ये chord inside है. Chord का मतलब क्या हुआ जो which is inside the conic. So इसका middle point, suppose this is the middle point of this. This is the middle point of this. So this line, the locus of the middle point of a system of parallel chords, is called a diameter. So this is diameter. And these are the middle points of the chords. These all are middle points. The locus of the middle points of a system of parallel chords of a conic is called a diameter. It's called a diameter. Okay. ये तुम्हारे कोनिक कैसा लिया which is open. अगर आप जैसे एलिप्स ले ले या सर्किल ले ले तो सर्किल में तो होता ही है diameter. If you will having all the chords parallel to this, you know, then the middle point का जो the locus of middle point will be what? Diameter ही तो आएगा, है ना? इसी से नेम इसका है diameter. This is exactly the diameter of a circle. But in any conic, you can take this as a diameter if it is the locus of middle points. And conjugate diameter, conjugate diameters. You know, जब भी conjugate का word आएगा, it means you have two things, है ना? कि conjugate का मतलब होता है relative. You are talking about relative to something. So conjugate means two things are there, है ना? The conjugate points होते हैं, alpha plus minus I beta. या पीछे आपने देखी थी conjugate क्या था concept? Conjugate lines थी जो. Conjugate क्या था? Polar. है ना? Conjugate lines. They are conjugate diameters. So two diameters are said to be conjugate when each bisects chords of the conic parallel to other. Parallel to the other. ठीक है, means two diameters. तो two diameters, एक diameter तो ये हो गया, है ना? अभी this diameter is bisecting this. Now, if they bisect the chords of the conic parallel to the other. अब इस diameter के parallel अगर मैं chord ले लूं, इस diameter के parallel, so I can take this red color chord, है ना? This is parallel to this diameter, suppose, like this. ये chord आ जाएंगी इस तरीके से. Okay? अब इन chords को अगर मैं I will take a locus of the middle points of these chords. So suppose this line is coming. This will be coming like this. So this line
and है ना, this is the locus of the chord parallel to this diameter, and this is the locus of the middle point of the chord, this. So these two diameters है ना, so one diameter is the locus of the middle point the other chord. These they called conjugate diameters. तो यहाँ पे ब्लू और ये रेड, दिस इज योर कॉन्जुगेट डायमीटर. ऐसे चलो मैं इसे अगर यहाँ पे रीड कर दूं इस लाइन को सेपरेट करने के लिए. सो दीज आर conjugate diameter. Conjugate diameters. Okay, this is the concept of conjugate diameters. So here you can see we can find the equation of conjugate diameters here of the diameter, locus of the middle points of a system of parallel chords. So you want to find what is the equation of this diameter. So suppose conic is given to you, and we are assuming the chords of the conic I am taking in general any conic. Conic may be anything. तो वही जो हम लेते आए अब तक, ax square plus 2fy plus c is equal to 0. This is the conic, and let the chords of the conic be drawn parallel to some line, parallel to line y is equal to mx. Okay, means कि जो chords होंगी ये है ना, जैसे इसको मैं ले लूं, तो जो chords हैं ये what will happen, they will be parallel to some line. तो मैंने एक line मान ली, suppose with all these chords parallel to some line y is equal to mx. इस line के parallel है सारी, तो इन सारी chords का slope वही होगा जो slope इसका यानी कि m. Okay, and इसे हम 1 कर लेते हैं. Now I want to find the equation of the diameter. So we already know that equation of chord. अच्छा, इसमें एक चीज और मान लेते हैं. Let us suppose x dash y dash be the middle point, and let x dash y dash be the middle point. क्योंकि middle point का concept हमारे पास already है. We already have so many information for a chord which has a given middle point. तो इस किसी भी chord का मान लो, इसका हमने मान लिया x dash y dash जो है वो middle point है ना, किसी एक chord का. तो let x dash y dash be the middle point of one of the chords of one of the chords of the system of of one of the chords. किसी एक chord का हमने मिडिल पॉइंट मान लिया. देन तो अगर इसका मिडिल पॉइंट ये है तो इस chord की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताइए, इफ यू नो द मिडिल पॉइंट. देन इक्वेशन ऑफ दिस chord is क्या होती है, इफ यू नो द मिडिल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ chord with a given middle point of this conic, T is equal to बताओ भाई, किसी को याद है? नहीं. T is equal to how much? Ex(x1) है equation of a chord with a given middle point, T is equal to S dash. ये होती है भाई, है ना? T is equal to S dash. रिकॉल करते रहा करो बीच बीच में, इसलिए प्रॉब्लम जो मैं देता हूँ उससे एक आध प्रॉब्लम अपने आप कर लिया करिए, उन प्रॉब्लम से ही कंसेप्ट यूज होते हैं. सो T is equal to S dash is the equation of a chord with a given point, given middle point, है ना ये.
सो टी इज इक्वल टू एस डैश इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड हो जाएगी, इस कॉर्ड की इक्वेशन आएगी. तो t means your tangent and s dash means putting the point x dash y dash on this. So this will give you, so this implies that ax x dash plus it h है आपका you know x y dash plus x dash y plus by y dash plus g times x plus x dash plus f times y plus y dash plus c is equal to s dash means just putting the point there, ax square by dash square plus 2gx dash. यहाँ पर हम calculation में you can arrange some terms. I want to write actually equation, so I will write it in a linear form. Linear form मतलब linear form इस type की होती है, ax plus by plus c is equal to 0. It is equation of a line ax plus by plus c. So I will write firstly x copy x term, then y term, then constant. ये सब constant है आपका right hand side वाला. It is constant. When you will put the point, it will give you some scalar quantity. So I will write firstly coefficient of x. So what is the coefficient of x here? Ax dash plus and x is coming here. hy dash है ना, यहाँ पर आ रहा है, और x का coefficient कहाँ आ रहा है? ये है plus g. Similarly, you can write the coefficient of y. So y into hx dash, this यहाँ से hx dash plus b y dash from this term and plus from this f is equal to ax dash square plus 2hx dash y dash plus and so on. ये term लिख देंगे without c. So it is your equation of a chord this. अब this chord is parallel to this. तो अगर ये chord इसके parallel है तो both the lines, what the thing will be same for both the lines? क्या same होगा इनका? M है ना? Because I have assumed that the suppose any line parallel to this, parallel to all these chords. तो दोनों का slope same होगा? Yes, sir. So the slope of above chord must be m. That means m should equal to, अब इसका slope क्या है? Slope क्या होता है? Coefficient of x when we write y is equal to is this form. Like इसे इधर ले आएंगे तो minus a upon b x minus c upon b. तो here when you will take on right hand side and minus से divide करेंगे, slope क्या आ जाएगा बताइए? Minus a x dash plus h y dash plus g upon divided by this. Comparing with y is equal to mx plus c over h x dash plus by dash plus f. This m is equal to this. इसे अगर हम अब इसे, तो ये क्या आ गया आपके पास? m is equal to this upon this. तो m मिल गया आपको. So therefore the required locus is the straight line क्या हो जाएगा? इसे इधर ले आके सॉल्व करके x y रख दिया ax plus hy plus g and plus इधर माइनस होगा, इधर ले आएंगे तो m times hx plus by plus f is equal to 0. So this is the required locus and this is actually the diameter. Which is the diameter? Which is the equation of the diameter? तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायमीटर आ जाएगी. तो इफ यू सी हियर ये किस तरीके से लिखी हुई है? ax plus hy plus g plus m times hx plus by plus f है ना, इस फॉर्म में लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ कि दिस पासेस थ्रू द दिस
passes through the point of intersection of the lines. कौन सी लाइंस? टू लाइंस जो है ax प्लस hy प्लस g एंड hx प्लस by प्लस g इज इक्वल टू 0 प्लस f इज इक्वल टू 0 है ना। इस फॉर्म में अगर आप लिखते हैं किसी इक्वेशन को तो ये इट इज अ फॉर्म व्हेन यू हैव अ लाइन। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन passes through the intersection of two lines. And the point of intersection is called the center of the conic. The point of intersection is called the center of the conic. Okay. Center of the conic. So the diameter of a central conic passes through the center. अगर कोई central conic है तो उसका जो diameter होगा वो आपका center से पास होगा। जैसे ये central conic है, ये ellipse है, तो उस केस में the diameter will be passing through the center of a central conics. Otherwise सेंट्रल कोनिक नहीं है, ऐसे पैराबोला है ना, इसका सेंटर नहीं है, so here it will be passing through like this. So it was a concept of diameters. Condition. Then we have condition for conjugate diameter. Condition for conjugate diameters. Means what is the condition? That two diameters are conjugate to each other. So what I will suppose? I will suppose that let us suppose two diameters are given to you, and I will find what is the condition that they are conjugate. Okay. Let the diameter drawn parallel to y is equal to m dash x, two diameters दूंगा मैं. So you are having like this. Suppose you have a conic. Suppose this. So here, if you have, these are the parallel chords. Suppose, and you have this line. This is the locus of all the chords. Locus of the middle points of all the chords. So what I am taking, suppose these chords, है ना, ये तो हमने पीछे लिया था अभी, कि suppose all these chords parallel to y is equal to mx, and this is the diameter. So I am supposing, suppose this diameter is parallel to another line y is equal to m dash x. Another line y is equal to m dash x. ठीक है? So let the diameter drawn to the diameter I suppose parallel to y is equal to m dash x. Parallel का मतलब I am taking that, let us suppose the slope of this given to you. So we write in this way that this is parallel to some given line. So let the diameter drawn parallel to y is equal to m dash x, which bisects all the chords of the conic
of the conic S is equal to 0, है ना, and which are parallel to y is equal to mx. ये हमारा पहली assumption है. All the chords ये किसके parallel है? Parallel to y is equal to mx of the conic. So अभी हमने निकाला equation of diameter. Then equation of the diameter is ax plus hy plus g plus m times hx plus py plus f is equal to 0, है ना. ये अभी हमने we have just found this equation of a diameter when the chords are parallel to y is equal to mx, है ना. Keep in mind ये m क्या है? It is m is the slope of the parallel chord. Now the conjugate diameter, है ना. So what is the, now this diameter is parallel to, अब जो इसकी conjugate diameter होगी देखो, what is the conjugate diameter? What is the conjugate diameter? Conjugate diameter क्या होगा? वो diameter जो अगर हम chords लें इस diameter के parallel like this, है ना. Conjugate diameter will be what? किसके parallel आएगा वो? इस ब्लू वाले, है ना. ये जो इसके अगर हम parallel लेंगे ये like this, यस सर, ये जाएगा. इनको जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन आएगी, सपोज दिस, ये कॉन्जुगेट डायमीटर होगी आपकी, है ना. यू नो ये कॉन्जुगेट डायमीटर हो जाएगी इस ब्लू लाइन की. सो हेयर यू कैन से बाय द, सो दिस इक्वेशन अगर मैं इसे नाम सपोज स्टार कर दूं, 1 कर दें इधर इसको. सो बाय द definition of conjugate diameter, this one is, ये अभी जो 1 आई है ये इक्वेशन 1 किसकी इक्वेशन है? देखो 1 तो इसकी आई है ना, ये जो लाइन थी ये है 1 आपके पास, डायमीटर ये है, दिस इज योर 1. तो 1 इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू m डैश x, है ना. ये जो 1 इज व्हाट, दिस इज द लाइन, ये हमने पैरेलल माना हुआ है m डैश x के. सो 1 इज पैरेलल टू y. डेफिनेशन क्या, ये हमारा assumption था एक्चुअली, बाय द assumption. डेफिनेशन यहाँ पे तो हमने शुरू में assumption माना है कि this is diameter parallel to this, so by the assumption this line is parallel to m dash x. So what I can write, thus यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, क्योंकि हमें इसे फिर अब मुझे रिलेशन लाना है कॉन्जुगेट डायमीटर के टर्म में, तो क्या करते हैं, इसे फिर लिखते हैं ax प्लस vy प्लस c की फॉर्म में. तो यहाँ पर ax की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ax प्लस mh, है ना, 1 को. तो व्हाट विल बी कमिंग, a प्लस hm x, देन y का कोफिशिएंट प्लस h प्लस bmy प्लस कांस्टेंट टर्म्स g प्लस mf इज इक्वल टू 0, वेयर अब ये व्हाट इज दिस, दिस इज दिस डायमीटर, अब इट इज पैरेलल टू दिस, तो इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, m डैश के इक्वल. सो m डैश विल बी व्हाट, स्लोप ऑफ दिस, सो माइनस a प्लस hm अपॉन h प्लस pm, ये स्लोप आ गया इसका, इस कॉर्ड का स्लोप बाय कंपेयरिंग फ्रॉम दिस y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो इसका जो स्लोप है ना, इट विल बी इक्वल टू m डैश, क्योंकि वी आर अज्यूमिंग कि दिस डायमीटर इज पैरेलल टू दिस m डैश x. तो ये m डैश x इज दिस. सो दिस इंप्लाइज दैट, इसे अगर हम सॉल्व कर ले तो यू गॉट a प्लस hm प्लस प्लस हाउ मच, इसे इधर ले आइए, hm डैश
plus b m dash is equal to 0. और if you want to write you can solve it. तो a plus इसमें से h कॉमन ले लें, m plus m dash plus b m dash is equal to 0. So it is the condition. क्योंकि हमें रिलेशन निकालनी थी कंडीशन फॉर कॉन्जुगेट डायमीटर्स की. तो आपको अगर 2 लाइंस गिवन है, कोई भी 2 लाइंस, तो उन लाइंस के स्लोप पता होंगे. अगर स्लोप पता है तो इफ द स्लोप्स आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, है ना. सो दिस इज द कंडीशन दैट 2 लाइंस आर कॉन्जुगेट, 2 डायमीटर्स आर कॉन्जुगेट. इनफैक्ट ये दोनों डायमीटर्स हैं. सो दिस इज द कंडीशन that 2 diameters y is equal to mx, ये लिख पैरेलल टू लिखते चाहे तो यही पैरेलल टू y is equal to mx and y is equal to m dash x are conjugate diameters. नेक्स्ट कंडीशन से चेक कर सकते हैं. a plus h m plus m dash plus b m dash इक्वल टू, क्योंकि अगर 2 आपको डायमीटर्स दिए हैं तो उसका स्लोप गिवन होगा, है ना. अगर स्लोप गिवन नहीं है तो यू कैन नॉट फाइंड. तो सम डेटा विल बी गिवन टू यू ऑफ कोर्स, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. वन प्रॉब्लम एग्जांपल 1 पेज 82 पे प्रॉब्लम करते हैं. फाइंड अ कंडीशन दैट find a condition that the lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Suppose say number 1 कहते हैं, you know it represents a pair of straight lines. ax square plus 2hx square plus by square is equal to 0. This may be conjugate diameters of the conic ax square plus 2hxy plus by square is equal to 1. ये कोनिक की क्वेश्चन है आपकी. So you have to find a condition कि these lines may be conjugate diameter of this conic. ओके, तो कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, इस कंडीशन में पुट करना होगा. लेकिन उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दीज 2 लाइंस, है ना. स्लोप फाइंड करना है. तो हमने माना लेट y is equal to mx and y is equal to m dash x be the conjugate diameters, है ना. इससे कंपेयर करा लेंगे. सपोज दीज आर द conjugate diameters of this conic. इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ना. इस फॉर्म में लिखते हैं. नाउ अगर कॉन्जुगेट डायमीटर है सो वी हैव y माइनस mx y माइनस m dash x, है ना. दिस इक्वल टू 0. ये मैं लिख सकता हूँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. इफ 2 लाइंस आर देयर देन दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना, इन दिस प्रोडक्ट फॉर्म. यस सर, प्रोडक्ट में लिख दिया ना, ये आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी क्योंकि दे विल बी लाइक दिस, ऐसे जा रही होंगी. सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर के टर्म अरेंज कर लेते हैं इधर. तो m डैश और माइनस टर्म को रिमूव कर दें तो m डैश एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस m डैश एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसे हमने अरेंज करके ऐसे लिख दिया, है ना. नाउ अब ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी आइडेंटिकल टू दिस लाइंस, क्योंकि ये भी पेयर ऑफ लाइंस है जनरल, है ना. सो दिस मस्ट बी आइडेंटिकल. इसको अगर मैं लिख दूं 1, इट इज वो 1 था, ये 2
it is 3, so 3 must be identical with 1, है ना, क्योंकि इस प्रॉब्लम में गिवन है कि ये लाइंस अगर कॉन्जुगेट डायमीटर्स रिप्रेजेंट कर रही है और ये नॉर्मली ये होंगी तो दे मस्ट बी आइडेंटिकल। तो अगर आइडेंटिकल है तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। तो हियर यू हैव a, here you have mm dash, so I can compare, so you will be getting mm dash upon a is equal to minus m plus m dash upon 2h, this equal to, and here you have क्या है b1 1 upon b, okay। तो यहाँ से you can find the वैल्यू ऑफ mm डैश m प्लस m डैश, है ना, ये वैल्यू निकाल के इस कंडीशन में रख देंगे बस। सो यू गॉट, सो दिस इंप्लाइज दैट mm डैश इज इक्वल टू a अपॉन b एंड m प्लस m डैश इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b है। फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो ले लिया, सेकंड थर्ड। सो सिंस द कंडीशन इज, कंडीशन क्या निकाली थी अभी, a प्लस h m प्लस m डैश प्लस b m डैश इज इक्वल टू 0। सो पुटिंग इट हेयर, तो a प्लस h माइनस 2h अपॉन b, a अपॉन b इज इक्वल टू 0, b एलसीएम ले ले, तो a b माइनस 2hh plus ba is equal to 0. So it is the condition, this is the condition that this particular pair of straight line will be conjugate, है। तो यहाँ सिंपल हमने इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया। क्लियर है भाई, क्यों भाई? यस सर। ठीक है। नाउ इन पेज 83 एक्सरसाइज है आपकी, पेज 83 पे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मींस इसमें कुछ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। इसमें आप करेंगे प्रॉब्लम्स, कुछ मैं आपको दे रहा हूँ ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सॉल्व भी है इसमें। ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व है, मैं आई एम राइटिंग इट हियर, 1 3 4 और 6 8 9 and 10 11 10, ये प्रॉब्लम्स आप करेंगे। एक 11 प्रॉब्लम है, चलो सिर्फ these are home assignment, so you will try. Sir, when we will have to submit this home assignment? When you are done, just submit it, because you need Okay, to, sir. you are going to finish, this is the last topic, one couple of problems are remaining, so just submit it whenever you are done. As soon as you will submit, it will be good for you. तो जैसे यूनिट खत्म हो रहा है तो आज ही से लग जाइए और इसे सबमिट कर दीजिए। Prove that the, I will share the link. Once you are done, I will share the link. There you can submit all these things. Prove that the locus of the middle points of chords of the conic x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, which subtend a right angle at the center of the conic is x square over a4 plus y square over b4 is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square. ठीक। Prove that the locus of the middle points of chords of a conic. Conic क्या है? You can identify what is this conic? क्या है ये conic? Any idea? ये conic क्या होता है? Ellipse.
है ना? Yes, sir. इट इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन Yes. ऑफ एलिप्स यार, प्लस है माइनस Ellipse. होता है वो ना। हाँ, तो ये कह रहे हैं प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ कोनिक विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब क्या ऐसी कॉर्ड्स हैं जो यहाँ पर सेंटर से राइट एंगल बना रही है, सपोज लाइक दिस। तो ये जो कॉर्ड है ऐसे ऐसे और बहुत सारी कॉर्ड्स मिलेंगी जो राइट एंगल बना रही है, दिस एंगल इज राइट एंगल, है ना? तो प्रूव दैट लोकस, इनके जो मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट जो है, सपोज दिस इज द मिडिल पॉइंट, है ना, यहाँ कहीं पे लाई करता है मिडिल पॉइंट, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक्स एक्सिस पे हो। सपोज एक्स डैश वाई डैश इज द मिडिल पॉइंट, तो इनका जो लोकस है वो ये होगा, ठीक है। ऑल द कॉर्ड्स विच आर सबटेंडिंग अ राइट एंगल विद द सेंटर, दिस इज द सेंटर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनके मिडिल पॉइंट का लोकस जो है आपके पास दिस विल बी दिस, ये हमें शो करना है। क्लियर है प्रॉब्लम अब? तो यू हैव गिवन अ मिडिल पॉइंट, यू हैव अ कॉर्ड, तो मिडिल पॉइंट की क्वेश्चन लिखेंगे विद द कॉर्ड की क्वेश्चन लिखेंगे विद द गिवन मिडिल पॉइंट, और फिर एक क्वेश्चन निकल के आएगी और वहां पर कंडीशन लगाएंगे राइट एंगल। आपकी दो प्रॉब्लम बची हैं इस चैप्टर में, एक ये है, इसके बाद एक और है। अब उससे मैं आज ही फिनिश कर दूं अभी कंटिन्यू करके, या नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करके फिर यूनिट 3 स्टार्ट करूं? बताइए क्या चाहते हैं आप लोग।